guys, so मैं अभी clean कर रही हूँ. This is all our miscellaneous stuff जो मैं अंदर डालूंगी अभी. And my idea of making this video is कि मैं थोड़ी बात करूँ and I also will clean my stuff, which I think is a perfect idea. Done. मेरे पास बहुत सारा कचरा है फेंकने को guys, बहुत सारा. So where should we start? Why am I making this video? शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, थोड़ा और हमको कम करना पड़ेगा. शाम को there was this message that my manager did it to me. He said, Bhavna, we need to discuss. We were not able to submit the monthly report and we have to find a solution of it. And I think I've already discussed this with you. And I got into full-blown panic. I was like, what the fuck? It's done. I'm done. And the minute I got this message, as the most sane person, I messaged ChatGPT. What should I do? And I was like, oh my god, what should I do? I was like, मेरा बस यही point है कि मैं weekend को क्यों काम करूँ? मुझे नहीं पसंद weekend. I absolutely hate it. So why should I work in the weekend? पर करना तो पड़ेगा मुझे because that's my job. I'm not saying कि मेरे जो workplace वाले हैं, they are like very toxic and everything. Like last year there was a scene, but I got out of it. So they're decent people, but sometimes, especially in my case, it shouldn't have to be necessarily a problem अगर वो मुझे परेशान करे. Sometimes my disinterest परेशान्स me. I ordered this from Meesho like few months back. I guess in April. अब इसमें मैं कपड़े fold करके कल रखूंगी कि अभी देखते हैं. And this is like Sunday night. Tomorrow I have to go to office and it is like it is making me miserable. I don't want to go to the office. I don't want to. And I've been thinking about it कि क्यों नहीं जाना मुझे ऑफिस में. ऐसा तो क्या ही करते हैं मेरे साथ, कुछ तो करते हैं, मेरे बेचारे अच्छे लोग हैं, तो क्यों नहीं जाना मुझे ऑफिस? Simply because मेरा इंटरेस्ट नहीं है. And even now I was talking to a friend and I realized कि wait a minute. And I realized कि for me to do something, it is very important कि मुझे उसमें मजा आए. Like today I did not go to the local bookstore that I am always talking about and I felt so guilty. I felt so bad and I was ready to risk everything at that for that. If you tell me कि भावना कल सुबह जाके तुमको बुक स्टोर जाना है, मैं 6 बजे 5 बजे उठ जाऊंगी. But if you tell me कि कल 2 बजे मुझे ऑफिस जाना है, I won't go. For me it is completely interest based. And so I was actually questioning थी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मैं रिस्क लेती हूँ, जिसके लिए मैं जिसके लिए I go to that extra mile. And for me it's books. And I was actually thinking कि in my life, my entire life I have gone through this path जो या तो किसी और ने मेरे लिए डिसाइड किया या मैंने उस इंस्टेंट पे डिसाइड किया. Like being in the position, being in the department that I'm currently in, studying in the college that I was studying in. Like everything was pre-decided, and I've always been worried about these decisions, and I usually follow these decisions because I think it might be for the best. And but the thing is, कि I don't like to blame people. I think it is the most prettiest thing someone can do is blaming someone else. It, by the way, like 1 month ago, I shifted to this place, and the rent is quite high, and the electricity bill is it's very much. But I'm happy here. I'm able to do things. The reason why I shifted here is being fulfilled, and I'm happy about it. But I have never made any decision for myself. मैंने हमेशा दूसरों के ही रास्ते पे follow किया है. And sometimes it scares me that will I ever be able to do that. A random point. Yesterday I found my 2024 vision board and everything on that came true. Might be an exaggeration, but legit everything. I'm going to get myself the sellotape and I'm going to stick my vision board here because I need to think. So I'm back, guys, and I'm going to first of all wear this crown and I'm going to stick this vision board. And I also want to you guys wait a minute. I got this and I was really excited for it because I was really excited to organize stuff. And as someone who is neurodivergent, the best thing you can do
is to organize things. Life is already hard for us. That's how I'm not liking the ground right now. And the best thing you can do is like, invest in organizational things and everything. I've started doing it and it has changed my life. So one tip for Bhavna is to do that. And this is my vision board for this year. I made it when I was in my other house. Excitingly, shit. And I think little imperfections are good. And a lot of things have, बहुत सारी चीजें इसमें से हो गई है. First of all, like eating good food, I guess, getting myself an iPhone, shifting to a new place. I've also started writing my book. I attended conferences. I've started reading more. I started making YouTube videos. I went on a flight. I discovered I went to two new places. Coimbatore, Mehsana, Mumbai, you can say. So yeah, a lot of things have been happening for me, which I'm really grateful for. So like I think days like this, like I'm happy, and it's okay. मतलब मेरा ऐसा है कि am I don't think so I'm cut out for this corporate thing. I'd be also like making a decision too early. My Okay, so I know this long form video ये ज़्यादा कोई देखता नहीं है तो I can say out loud, but my therapist told me to prepare for CAT examination. Am I going to do it? I joined a study channel, like उधर सब मिलके पढ़ाई करते हैं. I joined that today, जहाँ पे मेरी दोनों बहनें भी पढ़ती है. I hope मैं कल से करूँ CAT की preparation at least 1 घंटा. And I hope मेरा कल दिन अच्छा जाए. I don't know. I know for sure कि मैं एक दिन बहुत अच्छा कमाऊंगी. And I will do something really good for myself because the way I'm already going, I've made a lot of improvements in my life. And people usually, if someone would ask me, people usually miss their childhood a lot. For me, it's not like that. I love my adulthood. Not like love. I have a love-hate relationship because, come on, who likes adulthood? Matlab, it is very hard being adult, but the freedom is best. Also, like, I get to do things that I love. आज मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी बाहर. I also bought a top for myself. ये सब चीज़ें बचपन में कितना वो था. Yesterday I watched this gay romance show called Heated Rebellion. It has consumed me. Also मैंने अपने एक account पे post डाला है उसका. And I think that was very iconic of me कि मैंने वो post डाला because it reminded me of मैं बचपन में भी ऐसी obsessed हो जाती थी show से, पर मैं ज़्यादा देखती नहीं थी. It is very weird कि या तो मैं obsessed ही हो रही हूँ या तो मैं कुछ भी नहीं देख रही. I've not seen a lot of shows. कभी कभी मेरे को उसका भी गिल्ट आता है कि मैं क्यों नहीं देखती. कभी कभी मुझे randomly किसी भी चीज़ का गिल्ट आता है कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मैं क्यों ये कर रही हूँ. There are a lot of things which I question. इसको मैंने बिगाड़ दिया है क्या? It has already shit. ये बिगाड़ गया पूरा. पता है यूट्यूब चैनल का फ़ायदा तो है, मतलब मुझे लगता है इंसान को खुद से काफ़ी बातें करनी चाहिए. मेरे अभी एक दोस्त का कॉल आया था. He and I are big fans of Mr. Divya Prakash Dubey because we love his work. तो मेरे पास कैची है और ऐसे ही मैं बर्बाद कर रही हूँ. मेरे पास जब कैची है मैं क्यों नहीं यूज़ करी. Let it tell me why I'm not. चिंता मत करो. I have this InShot Premium जिससे मैं मतलब this is not a sponsored video obviously, but इससे मैं थोड़ा एडिटिंग मेरा अच्छा हो जाता है InShot Premium से. That's why मैं जो भी मम्मी जो भी डाल पा रही हूँ वो डालती हूँ. Also I got a barter collaboration. एक तो मेरे को आया था barter collaboration there. They did me dirty. उन्होंने नहीं किया मेरे साथ. उन्होंने मेरे को जीन जोन पे छोड़ दिया. मतलब उन्होंने ही सामने से अप्रोच किया था and they only ditched me and I was pretty excited about it. मैंने सबको दुनिया भर को बोल दिया था ये मेरा ये आ रहा है तो नहीं हुआ वो. बट मेरे को कल आया एक एंड आई सेड यस ऑब्वियसली. तो देखते हैं. मेरा बस एक बाकी है बस. जब तक ये विजन बोर्ड पता है 3 4 बार निकला ये बेचारा. अब ये भी थोड़ा थक चुका है. ये क्यों इतना निकल रहा है. मुझे इंटेंशनल वीडियोस बनाना अच्छे लगता है बट आई ऑल्सो लाइक मेकिंग दीज. इसमें इसमें मेरा रियल वर्जन पता चलता है. मैं मतलब हमेशा इतनी मैं पता है मेरा रियल वर्जन तो मुझे भी नहीं पता. दैट इज द नहीं हाँ दैट इज द थिंग. मैं खुद कंफ्यूज हूँ. मैं अभी खुद फिगर आउट करूँगी मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है कैसे रहना है. छोड़ो इतने में चलेगा. अभी लगा देते इसको. गाइस मैंने लगा दिया मेरा विजन बोर्ड. अब मैं इसको रोज देखूंगी. टेढ़ा लगा. अरे यार ये टेढ़ा लगा यार. शिट ये भी थोड़ा टेढ़ा ही है. बस हमने 4 से मैं अभी बस इतनी ही क्लीनिंग करने वाली हूँ. मेरे को आईब्रो भी बनवाना था पर मैंने नहीं बनाया. नहीं बनवाया अभी.
इन दी एंड आई जस्ट वांट टू से, मुझे ऐसा लगता है मेरा वीडियो बनाने का ये है कि मैं लॉन्ग टर्म जॉब, कॉर्पोरेट जॉब नहीं करने वाली। आई एम गोइंग टू मेक प्रेडिक्शंस फॉर मी। मैं लॉन्ग टर्म जॉब नहीं करने वाली। मैं कुछ क्रिएटिव ही करूँगी, मे बी यूट्यूब, मे बी बुकस्टाग्राम, बट मैं कुछ क्रिएटिव ही करने वाली हूँ। मेरा एंड गोल है बुक स्टोर खोलना। तो आई विल मेक अ प्लान फॉर इट। आई विल नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा। लाइक मैं कैट का प्रिपरेशन भी कल से करूँगी। आई विल डू एनीथिंग टू लीव दिस जॉब, नॉट बिकॉज दिस जॉब इज टॉक्सिक, बट बिकॉज आई फील आई एम नॉट कट out for it, and I don't want myself to like continuously go into that proving thing instead of enjoying it. Sometimes I enjoy bits and pieces of my job, sometimes I don't. So I want something कि मतलब मुझे इस जॉब में ना मेहनत करने का मन नहीं करता, बट दैट्स नॉट माई पर्सनैलिटी। मैं बहुत मेहनती भी हो सकती हूँ इफ़ आई लाइक समथिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने इंजीनियरिंग में उतनी मेहनत नहीं की थी, लाइक एवरीथिंग वाज सो फोर्स्ड, but at the same time I would have done that if I would have taken literature. And in fact cat is also also like an opportunity like that. मुझे लगता है मैं cat के लिए मेहनत कर सकती हूँ because I like the subjects, I like the chill it would give to my brain. We will do that, and there are definitely a lot of perks कि आपका चैनल कोई दिखता है नहीं ज़्यादा लोग, क्योंकि आप फिर ऐसे वीडियोस बना पाते हो। सो यार दैट्स इट। मुझे कुछ याद आएगा या कुछ भी होगा, ये आप मेरा शॉर्ट्स मत देखो, मुझे कुछ याद आएगा तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगी। आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीकेंड मे बी। बाय बाय।